हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो NIUS ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरवल बिटवीन टू हाई टाइड्स और लो टाइड्स? करेक्ट आंसर इज 12 hours and 25/26 minutes। ये 1 मार्क से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन एनी 2 मोस्ट साइक्लोन प्रोन स्टेट्स ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज 2 मोस्ट साइक्लोन प्रोन स्टेट्स ऑफ इंडिया आर फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकेंड वेस्ट बंगाल। ये भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द लेयर लाइंग बिटवीन द कोर एंड लिथोस्फीयर। द करेक्ट आंसर इज एस्थोनोस्फीयर। ये भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द टर्म वेवलेंथ। द करेक्ट आंसर इज वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल adjacent points in a wave. It is typically measured between 2 easily identifiable points, such as 2 adjacent crests or troughs in a waveform. तो ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट मेन 4 सब ब्रांचेस ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। द करेक्ट आंसर इज 4 sub-branches of regional geography are: first, regional studies; second, regional analysis; third, regional development; fourth, regional planning. Question number 6 है, name any 4 health programs related to women and children launched by Government of India. The correct answer is 4 health programs launched by Government of India are: first, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM; सेकेंड, जननी सुरक्षा योजना JSY; थर्ड, बालिका समृद्धि योजना BSY; फोर्थ, किशोरी शक्ति योजना KSY। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट 2 टाइप्स ऑफ लावा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लूइडिटी। द करेक्ट आंसर इज 2 टाइप्स ऑफ लावा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लूइडिटी आर: फर्स्ट है बेसिक लावा, सेकंड है एसिड लावा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000। द करेक्ट आंसर इज 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 आर: फर्स्ट हो गया अचीविंग मोर देन 4% पर एनम ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड है growth based on efficient use of resources and conservation of soil, water and biodiversity. Third points है growth with equity in region and among the farmers. Fourth points हो गया growth the caters to domestic market and maximizes benefits from exports of agricultural products. तो ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अब चलिए देखते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस विद आंसर के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सजेस्ट एनी 4 मेजर्स टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। द करेक्ट आंसर इज 4 मेजर्स to increase fish production in India are: first point है invest in technological innovation and transfer; second points है focus beyond the farm; third है shift incentives to reward sustainability; fourth, eat fish that are low on the food chain. Question number 10 है, which is the lowest layer of the atmosphere? State any 3 features of this layer. Correct answer is
Troposphere is the lowest layer of the atmosphere. Three features of this layer are: first, lowest layer of the atmosphere; second, height 8 km on the poles and 18 km on the equator; third, all weather condition in this layer. Question number 11 है different between weather and climate by describing 5 points of distinction of each. तो इसमें टेबल बना हुआ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वेदर और क्लाइमेट का कॉलम बना हुआ है। तो वेदर का देख लेते हैं क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है वेदर इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ए लिमिटेड एरिया। और क्लाइमेट का है क्लाइमेट इज द स्टडी ऑफ द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम फॉर ए लार्जर एरिया। सेकेंड पॉइंट है weather is influenced by any one of its predominant elements, temperature or humidity. Climate is collective effect of all its elements. Third point है the weather changes very often. It is more or less permanent. Fourth point है it is experienced over small areas of a country. It is experienced over a large areas of the continent. 5 points है और last points है a place can experience different types of weather conditions in a year. A place can experience only one type of climate. तो friends, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं अभी बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसे आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छा बेनिफिट हो, हेल्पफुल रहे ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए, अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस देखे, वो 1, 2 और 4 मार्क्स के थे। अब हम लोग देखेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज फ्लड? एक्सप्लेन द काउजेस ऑफ फ्लड एंड इट्स डिस्ट्रक्शन। द करेक्ट आंसर इज अ फ्लड इज एन ओवरफ्लो और accumulation of an expanse of water that submerges lands. In the sense of flowing water, the word may also be applied to the inflow of the tide. There are many causes of floods which are as follows. Natural causes of floods. First हो जाएगा high rainfall. Heavy rainfall raises the water level. When the water level is higher than the river bank or the dams, the water out comes from the river. There will be flooding. Second point is snow melt. Because of a global warming, the temperature of this year is higher than the temperature of many years ago. The third point is relief. Flooding often occurs in lowlands. This is because rivers flow more slowly in a low-lying areas. If the water volume increases suddenly, floods occur. 4 points है coastal flooding. Flooding always occur in coastal areas. High tides or a storm cause the water level to rise. Human causes of floods. First point है इसका deforestation. Large areas of forests near the rivers have been cleared. The lands are used to make room for settlement, roads and farmland. Second point है poor farming. Some farming practices can damage the vegetation cover, so the soil will be washed into the river easily. A. Poor farming. B. Over cultivation. Third point is poor water management. When the dams are poorly constructed or maintained, they can easily collapse and this results is flooding. Fourth points, population pressure. Because of large amounts of people, everything needs more like wood, land and food etc. तो ये सब जो थे वो काउजेस थे फ्लड्स के। अब इसका इफेक्ट्स देखते हैं। इसका इफेक्ट्स हो गया प्राइमरी इफेक्ट्स है। प्राइमरी इफेक्ट्स में बहुत सारे पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट्स हो गया फिजिकल डैमेज कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम ब्रीच
cars, buildings, canal and any other types of structure. Second point है casualties. People and livestock die due to drowning. It can also lead to epidemics and waterborne diseases. तो प्राइमरी इफेक्ट्स के 2 पॉइंट्स थे. अब सेकेंडरी इफेक्ट्स देखते हैं. सेकेंडरी इफेक्ट्स का फर्स्ट पॉइंट है वाटर सप्लाईज. फर्स्ट है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. सेकेंड इज क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर बिकम स्कार्स. Second is diseases, unhygienic conditions, spread of waterborne diseases. Third is crops and food supplies. Shortage of food crops can be caused due to loss of entire harvest. Fourth is trees. Non-tolerant species can die from suffocation. Question number 13 है name the northernmost parallel range of the Himalayas. Write 3 characteristics of this range. The correct answer is the northernmost parallel range of the Himalayas is Himadri, Greater Himalaya. Characteristics of this range are: first point, it is the highest range. Second is that continuous range from west to east. Third, average height of this range इसका है 6100 मीटर. तो ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन है. फ्रेंड्स गलती से छूट गया था, उधर से क्वेश्चंस मैंने डाल सकी थी तो यहाँ पे डाल दी 4 मार्क्स का क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज रॉक. डिस्क्राइब 5 पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक्स. द करेक्ट आंसर इज रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स. They are aggregates of a physical mixture of one or more minerals. Economic significance of rocks are: first, soil derived from rock. Second, building material. Third, source of mineral. Fourth, raw material for industries. 5, fuel. Question number 15 है giving suitable examples. Classify industries on the basis of ownership. The correct answer is on the basis of ownership, industries can be classified into private sector, state-owned or a public sector, joint sector and cooperative sector. Private sector industries. Private sector industries are owned and operated by individuals or a group of individuals, joint sector and cooperative sector. Public sector industries. The public sector industries are owned and operated by the government, such as Hindustan Aeronautics Limited and Steel Authority. Joint sector. Joint sector are owned and managed by the people from both the sectors. Example are Maruti Udyog Limited. Cooperative sector. Cooperative sectors are owned and managed by a group of people by pooling their resources. Accordingly, the profit is shared amongst them. However, the profit generally is not the main motive of these industries. Question 16. Explain various patterns of compact settlements of India with examples. The correct answer is settlements can also be classified on the basis of shape and pattern. Following are few important features of compact settlements. First point is in the settlements, houses are built very close to each other. Second point is such settlements are found in river valleys and fertile plains. Third point is the people are closely tied and shared common occupations. तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स का पैटर्न्स देख लेते हैं. इसका 5 पैटर्न्स है. तो पैटर्न्स ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट ऑफ इंडिया with examples. First is linear pattern. In such settlements, houses are located along a road, railway line, river, canal, edge of a valley or along a river. The second is circular pattern. Circular villages develop around lakes, tanks, and sometimes the village is planned in such a way that the central part remains open and is used
wild animals. And third is rectangular pattern. Such patterns of rural settlements are found in plain areas or wide inter-mountain valleys. The roads are rectangular and cut each other at right angles. The fourth is star-like pattern, where several roads converge. Star-shaped settlements develop by the houses built along the roads. Fifth is double village. These settlements extend on both sides of river where there is a bridge or a ferry. Question number 17 है, what is the meaning of watershed development? State 5 benefits which can be achieved by watershed development. The correct answer is the overall development with proper utilization of water in a particular watershed is considered to be watershed development. इसका benefits देखते हैं. Benefits of watershed development. First is supply for water for drinking and irrigation. Second is increases in biodiversity. Third is loss of acidity in the soil and free for standing water. Fourth is increases in the standard of living. Fifth is increase in employment. Question number 18. Describe various factors responsible for soil formation. The correct answer is specific factors are involved in forming soil and these factors vary worldwide, creating varied soil combinations and soil properties worldwide. 5 soil forming factors are. First points of soil formation is parent material. Parent material is the material from which a soil forms. It consists of unconsolidated and more or less chemically weathered mineral or organic materials. Second is climate. Climate determines the nature, physical, chemical or biological and rate of weathering that acts on parent material to form soil. The most important elements of climate for soil formation are precipitation and temperature. Third is organisms. Living organisms including plants, microbes, soil, animals and humans are collectively referred to as biodata. Biotic. Soil development is affected by both the type and number of organisms that live in and on the soil. Fourth point is topography. There is a strong interaction between topography and vegetation and their influence on soil formation. Depressions in dry grasslands areas are usually occupied by trees due to greater soil water content. Fifth is time. Soil formation is a slow process that takes hundreds or even thousands of years. A younger soil will reflect characteristics of the parent material better than an older soil, since insufficient time has elapsed to permit significant development. तो दोस्तों ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने आपको बताए. अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में नोटिफिकेशन की घंटी उसी भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे.